हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ऑल ओके? लेट्स कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पहले पढ़ा करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, that is vector quantity. What is the unit of electric current density? Ampere per meter square. After that we have studied about Ohm's law, and then after we have studied about drift velocity. तो मैंने आपको बोला था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या बनेगा। क्या आप लोगों ने पता लगाया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड। जैसे एवरेज वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। वैसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकंड। एक वेलोसिटी ही है तो यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देन आफ्टर वी विल ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। हियर आई हैव कंसिडर्ड वन metallic conductor of length delta x, and there are large number of free electrons inside this metallic conductor. When we connect this metallic conductor with some cell or battery, then there will be some external electric field. So this is a continuous electric field which is towards left. In the presence of electric field, these free electrons will experience force in the direction opposite to electric field. Electric field is towards left, then these electrons will experience force towards right. मानता हूं कि इनका मोशन ऐसा नहीं होगा, they will move in random direction, but these free electrons will be accelerated in the direction opposite to electric field. जाने वाले तो इसी तरफ हैं। Okay. Because of drift, these electrons are moving with some velocity, that is drift velocity. इन एन इन्फाइनेटिसिमल टाइम डेल्टा टी, छोटे से टाइम इंटरवल में क्या ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे? ऑल इलेक्ट्रॉन्स टू द लेफ्ट ऑफ एरिया एट ए डिस्टेंसेस वी डी डेल्टा टी वुड हैव क्रॉस्ड द एरिया। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव क्रॉस्ड द एरिया ए। दे आर एट व्हाट डिस्टेंस? वी डी डेल्टा टी। हाउ? We know the formula of speed. Speed, that is distance upon time. Therefore distance is equal to speed into time. So distance is equal to, these electrons are moving with drift speed vd, and they will cross this cross sectional area in time delta t, in small time interval delta t. So here all electrons to the left of area at a distances up to vd delta t would have crossed the area a. If n is number of free electrons per unit volume, mass per unit volume, that is mass density, charge per unit volume, that is volume charge density. Same way, number of free electrons per unit volume, that is number density or number density of free electrons. So n is number of free electrons per unit volume. Small n, that is number of free electrons per unit volume. It means in cubic meter there are n number of free electrons. In cubic meter there are n number of free electrons, and free electrons are free to move anywhere inside the material. In the presence of electric field, they will be accelerated in the direction opposite to electric field. Then there are n into vd delta ta electrons in the metal. टोटल मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं फ्री? एक क्यूबिक मीटर में कितने? स्मॉल एन. सो वी कैन राइट इन 1 मीटर क्यूब देर आर स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस मेटालिक कंडक्टर? दैट इज एरिया इनटू लेंथ. व्हाट इज द एरिया? दैट इज ए. एंड व्हाट इज द लेंथ? दैट इज वी डी डेल्टा टी. सो वी कैन राइट इन वी डी डेल्टा टी ए volume, what are the free electrons? In cubic meter there are n number of free electrons. Then
in this much volume what number of free electrons are there, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं इतने वॉल्यूम में. तो इन Vd डेल्टा TA there are n Vd डेल्टा TA number of free electrons. Total charge transported across this area A in time डेल्टा T. अब ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो इस एरिया को क्रॉस कर देंगे कितने टाइम में, डेल्टा टी में. व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दिस एरिया इन टाइम डेल्टा टी. कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट हुआ, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ यहाँ से, तो दैट इज डेल्टा क्यू. हाउ कैन वी फाइंड डेल्टा क्यू? यूजिंग क्वांटाइजेशन रूल ऑफ चार्ज. क्यू इज इक्वल टू एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई. So delta Q is equal to number of electrons, that is n Vd delta T into A. n Vd delta T into A. These are the number of free electrons. And what is the charge of electron? That is E. So delta Q is equal to Ne, number of free electrons that have crossed this cross sectional area A in time delta T into charge of electron, that is E. Here if we take this delta T on right hand side, here if we take this delta T on left hand side, then delta Q upon delta T, that is NeAVd, amount of charge that has flown per unit time is called charge upon time, that is nothing but electric current. Therefore I is equal to NeAVd. I is equal to NeAVd. Equation number 1. This is the relation between electric current and drift velocity. स्टूडेंट ये रिलेशन याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आप लोगों को. इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू NeAVd. व्हाट इज N? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज E? चार्ज. व्हाट इज A? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एंड व्हाट इज Vd? दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड. I by A, if I take this A on left hand side, then it can be written as I by A is equal to NeVd. I by A is equal to NeVd. What is I by A? That is nothing but current density J. Therefore current density J is equal to NeVd. Current density J is equal to NeVd. इसे कैसे याद रखें? J is equal to NeVd. क्या बोलेंगे? J is equal to NeVd. So current density J is equal to NeVd. Equation number 2. This is the relation between electric current density and drift velocity. इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है. Obtain the relation between electric current density and drift velocity. तो क्या बनेगा? J is equal to NeVd. If we write this equation in vector form, then in vector form it can be written as J vector is equal to minus NeVd vector. अब आप बोलोगे सर ये माइनस कहाँ से आया? चलो पहले मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रिक करंट विल बी. तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई. एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो करंट इस तरफ है तो करंट डेंसिटी किस तरफ रहेगी? इस तरफ. चल व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? मुझे बता Vd की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ. इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं तो Vd इज इन दिस डायरेक्शन. From this you can see that current density and drift velocity both are in the opposite direction. Current density and drift velocity both are in the opposite direction. So J vector is equal to minus NeVd vector. This negative sign indicates that current density is in the direction opposite to drift velocity. Drift velocity की opposite direction current density. Or we know that charge of electron that is negative.
तो वेक्टर में लिया है तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन ई वी डी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3। Therefore, this equation can be written as J vector is equal to minus NE as it is. In last lecture we have obtained the formula of drift velocity. याद है drift velocity का फॉर्मूला क्या था? VD vector is equal to minus EE vector by m into tau. यहाँ पे भी माइनस क्यों है? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस। हियर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्या बनेगा? माइनस एन ई एज इट इज, वीडी वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ई ई वेक्टर बाय एम इंटू टाउ, माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई इंटू ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई वेक्टर। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखो, कैसा इक्वेशन लग रहा है? दिस इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो ये इक्वेशन ऑब्टेन कर चुके हम। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। क्या था वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ? जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। सो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, तो ये और कुछ भी नहीं, जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा ई वेक्टर। इक्वेशन 4 and 5. From equation 4 and equation 5 we can say that sigma is equal to n e square tau upon m. Sigma is equal to n e square tau upon m. This is the formula of conductivity. What is n? Number of free electrons per unit volume. What is E? Charge of electron. What is tau? That is relaxation time. What is m? That is mass of an electron. Here we have obtained the formula of sigma, conductivity, and we know the relation between conductivity and resistivity. That is resistivity is reciprocal of conductivity. तो इसका उल्टा कर दे तो क्या बनेगा? रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। From this equation we can say that resistivity is independent of dimensions of the conductor. क्या यहाँ पे कहीं पे भी डेल्टा एक्स वी डी डेल्टा टी है? नहीं है। क्या यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं resistivity is independent of dimensions of the conductor, and already we have studied in previous lecture that resistivity depends only on the material. मटेरियल चेंज होगा तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी बदलेगी। रेजिस्टिविटी की वैल्यू डायमेंशन पे डिपेंड करती नहीं है, डायमेंशन बदल जाएगा, रेजिस्टिविटी बदलने वाली नहीं है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। दिस थियरी इज इंपॉर्टेंट थियरी। दे कैन आस्क यू to obtain relation between electric current density and drift velocity, or they can ask you to obtain the formula of resistivity using vector form of Ohm's law. So my dear students, write this theory 2 times in homework. इतनी सारी थियरी पढ़ ली है, अब सम कर लेना चाहिए, एक एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहिए। आप बोलोगे सर कब से थियरी हो जा रही है, थियरी हो जा रही है। आओ एग्जाम्पल करते हैं। Example 3.1. Estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross sectional area 1 into 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। पहले फाइंड करने को बोल रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड, तो मतलब फाइंड क्या करना है? वीडी। क्या फाइंड करना है? वीडी, ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूला हमको मालूम है ई बाय एम इंटू टाउ। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, रिलैक्सेशन टाइम होना चाहिए, तो ही हम फाइंड कर सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी, क्या दिया हुआ है? एरिया। एरिया इज गिवन टू अस 1 into 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। एरिया अवेलेबल, कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, आई गिवन 1.5 एम्पियर। अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट। Assume that
each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. What does it mean? For example, if there are 50,000 atoms in metallic conductor, 50,000 कॉपर एटम्स, तो जितने एटम उतने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 50,000 एटम है तो 50,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 1 लाख एटम्स है तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन? 1 लाख। 10,000 एटम्स हैं तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए? 10,000। जितने एटम उतने फ्री इलेक्ट्रॉन। ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वजह से करंट फ्लो होगा। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 × 10⁻³ kg per meter cube. Density of copper is given to us 9 × 10⁻³ kg per meter cube, and its atomic mass is 63.5 gram. Atomic mass of copper that is 63.5 gram. हमारे पास I है, A है, D है। D यहाँ पे क्या है? डेंसिटी, डायामीटर नहीं है। दिस इज डेंसिटी। यहाँ पे हम डेंसिटी के लिए रो नहीं लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में रो का मतलब क्या होगा? रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हम डेंसिटी के लिए क्या सिंबल ले रहे हैं? स्मॉल डी। ओके, फाइंड करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हमारे पास है करंट। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या हमने आई और वी डी के बीच का रिलेशन पढ़ा हुआ है? क्या रिलेशन था? I = NEAVD। आई है, ई है, ए है, वी डी हमें फाइंड करना है। क्या चाहिए हमको? स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू फाइंड। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे? नंबर ऑफ एटम्स पे से। जितने नंबर ऑफ एटम होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। A cubic meter of copper has a mass of 9 × 10⁻³ kg of copper. एक क्यूबिक मीटर में पर यूनिट वॉल्यूम व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर? 9 × 10⁻³ kg। करेक्ट? दैट इज गिवन टू अस, दैट इज द डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। सो पर यूनिट वॉल्यूम मास ऑफ कॉपर दैट इज 9 × 10⁻³ kg. What is the atomic mass? 63.5 gram. So for 63.5 gram of copper, number of atoms will be 6.02 × 10⁻23 atoms. Then for 9 × 10⁻6 ग्राम, किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करें? ग्राम में। तो क्या बनेगा? 9 × 10⁻6 ग्राम ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ एटम्स विल बी व्हाट? सो 9 × 10⁻6 into 6.02 × 10⁻23 divide by 63.5 gram. 9 × 10⁻6 into 6.02 × 10⁻23 divided by 63.5. So that will be 8.5 × 10⁻28 meter inverse 3, because this is the mass of copper per unit volume. It means this much mass is there per unit volume. So this many number of atoms are there per unit volume. Whatever number of atoms are there, same number of free electrons will be there. So 8.5 × 10⁻28 free electrons per unit volume. So this is nothing but number density, small n, that is nothing but 8.5 × 10⁻28 meter raised to -3. Unit of number density, that is per unit volume, that is meter inverse 3. You can see there are large number of free electrons per unit volume. In cubic meter there are 8.5 × 10⁻28 free electrons. इतने तो क्यूबिक मीटर में, मतलब टोटल मटेरियल में तो बहुत ज़्यादा होंगे। Now we know the relation between electric current and drift velocity. I is equal to NEAVD. Therefore VD is equal to I upon NEA. Electric current that is given to us 1.5. Small n already we found 8.5 × 10⁻28.
E, that is charge of electron, 1.6 into 10 raised to minus 19 in area that is given to us 1 into 10 raised to minus 7 meter square. Substitute all these values, you will get Vd is equal to 1.1 into 10 raised to minus 3 meter per second. So drift velocity of electron is 1.1 into 10 raised to minus 3 meter per second. So drift velocity of electron is 1.1 millimeter per second. This is the drift velocity of conduction electrons. It is the drift velocity of free electron, 1.1 millimeter per second. Now we will solve next part of this example, 3.1. एग्जाम्पल 3.1 में कंटिन्यू करते हैं पार्ट बी. कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड विथ, ये जो ड्रिफ्ट स्पीड मिली 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड, उसे कंपेयर करना है किससे? थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स. थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स. चलो कॉपर एटम्स की थर्मल स्पीड फाइंड करते हैं. ऑर्डिनरी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर. एट रूम टेम्परेचर T, already we have studied the formula of kinetic energy in standard 11, that is half mv square is equal to 3 by 2 kbt. Therefore v square can be written as root 3 kbt by m. Neglecting the numerical value 3, thermal speed can be written as under root kbt by m. So here substitute the value of kb, that is Boltzmann constant, 1.38 into 10 raised to minus 23. Temperature 300, room temperature 27 degree Celsius. If we convert it into Kelvin, then 300 Kelvin upon mass of copper atom. What is the atomic mass of copper atom? That is 63.5 gram. For how many atoms? 6.02 into 10 raised to 23 atoms. If I want to find mass of one copper atom, mass of 6.02 into 10 raised to 23 atoms is 63.5 gram. Then mass of one atom will be 63.5 into, if I convert gram into kilogram, then 10 raised to minus 3 divided by 6.02 into 10 raised to 23. If you solve this, you will get thermal velocity nearly equal to 2 into 10 raised to 2 meter per second. थर्मल वेलोसिटी करीब करीब ये मिलेगी 10 raised to 2 मीटर पर सेकेंड. बट इफ़ यू फाइंड थर्मल वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, देन that will be more, nearly 10 raised to 6 meter per second. At that time you have to substitute the mass of electron. So right now for copper atom we are getting thermal velocity 2 into 10 raised to 2 meter per second, 10 raised to 2 and here 10 raised to minus 3. You can see that thermal velocity is very large in comparison to drift velocity. drift velocity की comparison में thermal velocity कुछ ज़्यादा ही है, इलेक्ट्रॉन की तो और ज़्यादा होगी. So if we compare drift velocity with thermal velocity of copper atom, then Vd by Vth is equal to, just we are comparing orders, मैग्नीट्यूड को अभी काउंट नहीं करेंगे, वैल्यू को भूल जाओ. Vd that is 10 raised to minus 3 meter per second, 10 raised to minus 3. Thermal velocity is of the order of 10 raised to 2, so 10 raised to 2. So Vd upon Vth is equal to 10 raised to minus 3 upon 10 raised to 2. Therefore Vd is equal to 10 raised to minus 5 times Vth. 10 raised to minus 5, very small value. So drift velocity is very small in comparison to thermal velocity. Vd is 10 raised to minus 5 times Vth. Okay. In next part, what they are asking? Speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion. Speed of electric field. So when we are considering speed of electric field, that is nothing but speed of electromagnetic wave. About electromagnetic wave we will study in chapter number 8. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसकी स्पीड कितनी होती है? दैट इज़ नथिंग बट सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट. सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is 3 into 10 raised to 8 meter per second. 10 raised to 8 is very large
in comparison to 10⁻⁻3. So if we compare Vd, drift velocity of electron, with velocity of electric field, then Vd by Ve is equal to 10⁻³ upon 10⁸. ऑर्डर कंसिडर किया है 10⁻³ और इसका क्या बनेगा 10⁸. Therefore drift velocity Vd is equal to 10⁻11 times Ve. Drift velocity of an electron is 10⁻11 times speed of electric field along the conductor. So this way we can solve example 3.1. Now I am giving you one example 3.2 in homework. Try to solve that example 3.2 in homework. That is theoretical example, and related to that already we have discussed in theory part. So try to solve example 3.2 in homework. With this I am ending this lecture. आज एक एग्जाम्पल भी हो गया, थियरी भी हो गई. नेक्स्ट टाइम फिर से आगे बढ़ेंगे चैप्टर में. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.